Yeah, I can see that it's now. We're good to go? Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is keeping well today. आज हमारे साथ Samia and Mehrab हैं from Code Kids. Samia is in UK and Mehrab is in Pakistan, Lahore. और आज का टॉपिक बहुत हम सबके दिलों से नज़दीक भी है, लेकिन थोड़ा सा नर्वस भी हमें करता है, क्योंकि ये कोडिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड फील होती है. और मेरा एक्सपीरियंस कोडिंग में बहुत ज़माने पहले था, मैं मेहराब को यही बता रही थी. तो आई एम होपिंग कि Samia एंड मेहराब कैन मेक दिस इजी फॉर अस और हमें एक्सप्लेन करें कि ये किड्स के लिए कोडिंग कैसे होती है, और फिर उसके बाद स्पेशल नीड्स किड्स के लिए हम कैसे कोडिंग सिखा सकते हैं. Obviously, this is something which will be very beneficial. So, welcome Mehrab and Samia. Please share with us. Thank you for the opportunity. It's great to be here on this platform, and this is something that's really close to my heart because हम लोग बहुत सारे ऐसे बच्चों के साथ काम करते हैं जो obviously autism spectrum पे हैं, और obviously because it's a spectrum, it's a really wide spectrum. So a lot of children obviously who are who have been diagnosed are children who really like and enjoy working with screens. Because computers are so binary, right? मैं अलीना को पहले भी कह रही थी कि क्योंकि there's not that thing कि अच्छा इस बंदे ने मुझे sarcastically बात की है या इससे मुझे किस तरीके से बात की है. Computers आपकी जो आप कहते हैं वो understand करते हैं, and it's all very easy and very simple. So I think for a technical minded child, जो a lot of autistic children are, it really helps to understand that as well. So if I just share my screen with you guys, let me just actually turn the presentation on. आपको मेरी screen नजर आ रही है सबको? Brilliant. Okay, so basically आज का हमारा agenda यही है कि हम थोड़ा सा एक introduction दें to Code Kids, what we're about, and also why coding is so relevant in today's age, not just obviously for the neurotypical child, but just as much for the neurodiverse child, because like I said, computers are binary. There's no reading between the lines as you would with social kids. A lot of children who are on the spectrum really struggle with social communications, and schools are really being in school is a really difficult thing for them as well, because everything is so busy. There's so much going on, like a constant bombardment of information. You know, the teacher said, ab ye kare, ab bacche bag nikalein, bag mein se books nikalein, is wale page pe jaएं, and then do this and this and this. And they also don't like reading and writing, because writing especially, because a lot of children really struggle with fine motor skills and also gross motor skills. And that's why I think coding is so essential, because there's not that massive, a lot of kids who are in school, they come home and they're tired because they've been exhausted by all this kind of constant stream of information that's been flowing at them. Friend ne ye keh diya, playground mein bachchon ne ye keh diya. So it's all really, ye bachche thak jate hain because it's just overwhelming, the amount of information that comes through. Whereas I think on a screen, things are just so straightforward that, with that, they just get it. So just to start off, my name is Samia Razak. I'm from Lahore, basically born and raised. I did my degree in mechanical engineering from GIK in Pakistan. I've also got an MBA from the University of Oxford. I spent most of my early career in oil and gas, but then obviously things changed. I had kids, I had a family. So we kind of, my sister and I, and so we kind of discovered with growing children as well, my kids were very much like a lot of children who are on the spectrum. They weren't into music, they weren't into drama, they weren't into sports and things like that. So even in the UK, it's a very early kind of stage sort of industry, ed tech space. It's still growing very rapidly because बहुत सारे जगह हैं वहाँ पे नहीं easily available. And obviously since the pandemic, we've gone
sort of online, and our reach has has developed as well, which is why, you know, Code Kids Pakistan came into existence with Mehrab. Mehrab, on the other hand, do you want to maybe tell a little bit about, speak about yourself, Mehrab? Well, or Yeah, shall I? sure. I think it would be a good idea. So, like, my Samia gave me the opportunity to work for Code Kids in the United Kingdom when they were really doing well. I think that was back in 2018. So I came over, and I was a little bit concerned because I had no idea about how things were going to be and how it was going to go, because I had to be the instructor. So when you're the instructor, you have to be the person that people should look to as seriously. It's very difficult, trust me. Okay, so like Samia always gave me as much as training as possible. So she was really, you know, she was always there. She was always helping me out. Initially, like I think with any new thing you start, it's like the first few days they're a little bit scary, but once you get into it and you get into the zone, it becomes a lot of fun. So once I started teaching people coding and teaching little kids coding, I really started enjoying the experience because there's so many different people you get to know, and with everybody with different characteristics and different, you know, ideas or different mindsets, and it was a really really nice experience. So like I'd like to thank Samia a lot. Maybe I should do that right now as well for giving me that opportunity. But it was honestly one of the best experiences that I ever had. So after that, you know, right about now, when the pandemic took place last year, I was once again working with Samia, because everything was online, so it wasn't necessarily any need for me to be there for any drop-off camps. So at that point, you know, it was amazing that, you know, like I started teaching again. I really liked it, so I thought, okay, why not here? Why not the people here? Why shouldn't they? Why should they be deprived of the opportunity when it's easily accessible right now? So we did a scratch workshop, I believe so, some time ago, and I think should I go straight into it, or Samir, do you want to go ahead or? Let's just have more slides first, Mehrab, and then maybe I can hand Yeah, over to you yeah, for the we can talk about it. so कि काफ़ी सारी हम चीज़ें करते हैं उसमें एक online courses हैं which are probably our most popular kind of offering given the state of the pandemic and everything being under lockdown, and also these waves that are just going through with schools being open and then schools being shut, and these cycles as well. Holiday camps हम करते हैं over the summer holidays, spring break, December break. We also work in schools quite extensively, in fact, overseas as well as in the UK. So Pakistan में भी हम एक pilot करना चाह रहे हैं start, which we started something in China, but obviously वहाँ पे भी things are, this year has been very obviously up and down. So so once things settle a little bit, I think that's another avenue that we're going to explore. Our B2B events are also it's as and when they happen. We went overseas, so we had one in Kuwait, which was initially started off by the government of Kuwait, along with a company called 1001 Innovations. So it's basically bringing technology to the Muslim world. And making them understand that this is the future, basically. And then also we have after school clubs as well, where, you know, in the evenings and in the afternoons after a school day, बच्चे हमारे पास आते हैं. So camp set. Question though, Yeah. like before we get further into it, ये जो कोडिंग है, अगर आपको पाकिस्तानी अवाम को थोड़ी आसान लफ्जों में समझाना पड़े कि ये कोडिंग है क्या चीज बच्चों के लिए, like why would this be something good for them? Yeah, absolutely. So coding is essentially like आप एक कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, right, in a way that a computer understands. So अगर आप कंप्यूटर से जो भी आपने करवाना है, जिस तरह आपने जी आप कह रहे हैं कंप्यूटर को ये बटन है, ये अब मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन चला रही हूँ, and this is basically coded, right? So आप एक कंप्यूटर को कह रहे हो कि when I hover over this button, show me that blue circle, and if I click on the button, just go to the next, change the next slide. So essentially that's what coding is. It's telling a computer what to do in a language that the computer understands. Now a computer is very logical, right? आप computer को जो चीज कहेंगे वही वो understand करेगा. अगर आप ठीक तरीके से नहीं कहेंगे तो the computer will not understand. So essentially that's what it is. Now why is it really important? Is because, you know, it's the future. अभी हमें नहीं पता, although we have kids in school and where we're teaching kids,
I think very few adults and even people in the education sector understand really कि कल के आज के 20 साल के बाद jobs कैसी होंगी, कि things are moving so fast in technology. हमें नहीं पता, but हमें ये बात जरूर पता है कि it's going to be something to do with creativity. Computers are not going anywhere, right? And also the fact that it's generally a really nice thing because it helps you to think. अगर आपने एक कंप्यूटर को कुछ सिखाना है तो आपने पहले सोचना है ना. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप कंप्यूटर को दे रहे हो तो आप कंप्यूटर को सिखा रहे हो if I say something as the response that you need to be giving me, right? And obviously it's a really well paid career, people who go into tech jobs are the most sought after jobs. I graduated back in 2000, which obviously big boom, but हमारे जो CS सारा बैच हर graduate को 3-4 job offers थी. And it's very much the same now in this day and age because for some reason I think a lot of people think that it's a very difficult thing to do, but it's not. It's actually really pretty straightforward, and particularly for the neurodiverse children who are who don't like the nuances of like अच्छा मैंने किसके साथ बात करनी है, वो बातें जो है ना वो सारा कंप्यूटर में निकल जाता है because there is no sort of इसने मुझे ये टोन दी तो इसका क्या मतलब था, राइट? अब ये बच्ची जो है आप जो देख रहे हैं ये स्पेक्ट्रम पे है एक्चुअली, और ये बच्ची जब हमारे पास कैंप में आती है तो इसकी बाकी लड़कियां स्पेशली who are on the spectrum, they struggle because लड़कियां बहुत तेज होती सोशली, और वो और बच्चे के पास जाती है उनके साथ दोस्ती करने पर वो लाइक उनको स्पेस नहीं देती, वो उनके ऊपर बिल्कुल बहुत पास आ जाती है, तो सारी लड़कियां थोड़ी सी पीछे हो जाती है, बहुत इंटेंस हो गई है हमारे साथ, लेकिन इतनी खुश रहती है, बनाती है मिलती है बात से, she's like I've done something, मैंने एक रोबोट बनाया है, मैंने इसको कोड किया और देखो, तो वो खुशी का ना कोई वो लिमिट नहीं होती वजह से, बिकॉज वो लाइक उसको एक सेल्फ स्टीम मिलती है, उसको इस चीज से एक मिलता है कि ये मैं मैंने कुछ चीज बनाई है, तो आई थिंक दैट्स रियली इम्पोर्टेंट. एंड ऑल्सो वंस अगेन जस्ट आई डोंट थिंक आई कैन स्ट्रेस ऑन दिस इनफ, आपकी जो मिनिमल सोशल कम्युनिकेशन होती है कंप्यूटर के साथ वो आप करती है. और अगर आप देखें कि सिलिकॉन वैली इज फुल ऑफ पीपल who have Asperger's, and Asperger's is the same thing as autism basically, but they're just high functioning, right? A lot of Bill Gates ने कभी कहा नहीं कि मैं autistic हूँ, पर उनकी body language काफी लोग कहते हैं he rocks back and forth when he's thinking, right? वो जो stim आप अपने आप को दे रहे होते हो वो सब वो आसार सारे उनमें हैं. Yeah, absolutely. और ये दूसरा क्या नाम है? Jobs. Absolutely, the CEO, founder of Apple, he was autistic. Obviously, he didn't have a really good relationship with his own family, but he was driven, he was focused, he wanted to achieve something. And ऐसे लोग बहुत बड़ी चीजें करते हैं because वो छोटी चीजों के ऊपर नहीं करते कि तुमने मुझे ऐसे कह दिया, and therefore, and also I think all this, ये बात नहीं है कि ये लोग किससे बात कर नहीं सकते या इनको लोग पसंद नहीं है, but it's people who have fewer friends, who have meaningful relationships, who cannot do small talk. So, which I think is fine. Same thing with Satoshi Tajiri. I don't think a lot of people know him, but he is somebody who actually created Pokemon. And Pokemon एक ऐसी चीज है, which is, I think a lot of children who are on the spectrum absolutely love Pokemon and they understand it. So, Japanese anime, manga, बहुत ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं. And once again, it's something that pays well, right? So it's a good career choice to have. और समझ आता है कि हमारे बच्चे क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अपनी टैबलेट्स पे, अपने आईपैड्स पे, probably कंप्यूटर के ऊपर तो नहीं आए होंगे अभी तक, लेकिन do you think this is a good way of nourishing and nurturing that interest in technology? कि वो स्क्रीन टाइम को पॉजिटिवली और प्रोडक्टिवली यूज कर सकें, उसमें कुछ सीख सकें. Absolutely. I think rather than being, and this goes for every child in this day and age, because इतना सख्त, and obviously घर बैठने की वजह से भी, क्योंकि अब आजकल तो हम कहीं निकल नहीं सकते,
तो बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा they are really attached to the screens. But if this is done in a creative, productive manner, so they're not the end users of technology, but rather the creators and developers or something, then there's nothing better than that. So it's just redirecting obviously the flow of their energy. So that's a really important question, Batul. So and then I'll show you in my demo as well with Minecraft, because a lot of kids do play Minecraft. बच्चों बहुत addictive हो जाता है, लेकिन अगर हम we flip the coin for them and say आप ये सब चीजें कर रहे हो, पर अगर आप ऐसे कर लो तो देखो कैसा होए. और I think once the kids understand that, they just run with it, and they the energy and the desire to just do better and better. I think that's just amazing. So we use some of these technologies. I think Mehrab abhi demo karenge. Mehrab, are you going to just show Scratch to everybody as well, right? So Yeah, sure, this doesn't end here, because obviously there's everything, with technology, things are moving at such a fast pace. कि हम जो नई चीज आती है हम उसको adopt कर लेते हैं, and we can be very flexible as well with this sort of stuff that we can come up with. So Mehrab, I think do you want to maybe share sure, I your could screen? go ahead and talk about Scratch. So Scratch is one of the platforms that we usually work on. I think you got an idea of it. I could show you what Scratch. Oh, I cannot share my screen. I think my participant screen sharing has been disabled. But Scratch is one of the platforms that we do work on. You can enable it. So if you do that, I'll be able to share. Okay, now try it now. so yeah, thank you. So one of the projects that we usually do, like we do a lot of projects on Scratch. There's a plethora of projects. By the way, Samir, right now I'm actually at my Untitled 100, which I usually change, and I'm like, wow, I've done about 100 projects on Scratch with students. So one of the projects that we do is something like this. It's basically a wizard school project, right? So it involves a lot of block-based coding that we put in together. Like we start with some, I know it looks a lot right now, but trust me, once you get into it, we start very slowly, and then slowly and steadily we get better and better with it. And we always try to put in as much as creative input that the students can with regard to their projects. So one of this, like I can give you an idea of what this looks like. And this is a project that we've coded from scratch, basically. By that pun intended, I mean like from basically the start, right? So we code this. So if you take a look at what this looks like, by the way, this is actually from Samia as well, because she loves Harry Potter a lot. And I also, I'm not that big as passionate as she is. I'm more of a Marvel geek. So we usually make projects with regard to current franchises that people are interested in and stuff like that. And so this is her specialty. She enjoys this more. She's more बच्चों passionate को about it. heroes वगैरह काफी पसंद होते हैं, तो this would be nice. Marvel is good too, then, Mehrab. Yeah, exactly. So now let me just click on go and show you what it looks like. All right. So you start this way. You go with a couple of dialogues. Careful, spells can go horribly wrong. We have a witch appear. We have a magic wand show up. And we try a spell, transfigure as progress. We transform the witch into a frog. And then we transform the witch back. Then we try one more spell. The Wingardium Leviosa, levitation spell. Levitate the witch to the top. And then we bring her all the way down. और ये सब coding step by step. Yeah, this is all based like project basis. So we all arrange these blocks together, and that's when we're able to come up with stuff like this. And it's not even something that like a lot of students contribute themselves to these projects as well. So like they always give their own creativity input. It's not limited to, okay, this is the lesson plan and this is how it's going to be. No, they're always putting in new things and saying, Acha, let's put this in, let's put that in. How about we can make the witch transform into something else rather than a frog? Maybe have the characters teleport to a different location. That's one of my favorites. I love doing that. I went a little bit too ahead with the spells once. I went even into the spells such as the ones the dark wizards also perform. Samia hated me doing that, but that was good as well. But this is just one of the many projects we do. So like there are a lot of different ones. There's one is called Ocean Adventures. So that's underwater work. We do that. People can give their imaginative input in that. We also have video sensing, which is very interesting, where with the video image, like it shows your image on the screen. And I think we did one of those projects. It was like a Fruit Ninja project in which the Fruit Ninja, I think you played the game.
So what we did was that we had a video-based project, and we would actually cut the fruits with our hands, right? So we could slice things up and get score points for that, and create. And it's basically, this is just a story-based project. So there are a lot of game designing projects that we also do. So there's game designing, there's animation, there's story-based projects, all kinds of stuff. So I mean, this is what Scratch like looks like. It looks a little bit. You start coding right here on this platform. From here, you go ahead. You can choose sprites. You have various different characters you can choose from. Choose anyone you like. You can the different animals and the different categories with different characters. We have stuff like this, and some of them even have different movements, as you can see, right? So we code this in such a way so that they can also make the characters move and talk and do all these different things, and it really makes it more lively, the project. And so we have fantasy items from where we took out the witch and the wizard. So we have stuff like a centaur, we have an elf. So a lot of, and we use all of these, honestly. So all this code we arrange together from blocks that we find here. So we put these blocks in together, and that's how we generate this entire code. And slowly and steadily, this is a really, really good project, but we start with small things so that we get an idea of how the students are doing. And then we decide, okay, how should we push them further? How should we make them more developed? And we give them a lot of creative liberty, because that's what is very important. If they have that, then they can really, really, go ahead and do really, really nice things. Exactly. तो एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी ये जो सारी switching costume, starting sounds, ये basically blocks हैं और उनको आप code कर रहे हो? Block based. It's catered towards children, right? So we start with block based coding with children, and then once they grow older, of course, we have other programs as well, which are more technical. हिसाब से सोच रही हूँ कि क्या हम code लिख रहे हैं कि हम programming कर रहे हैं, but that's not what's going on. It's all pre-built in, और ये इसके blocks हैं जो we're putting them together. Yeah, like but the young natives. Got it. Sami, do you want to take over now, or should I? So I think a couple of things that Mehrab touched on which are really important. एक तो ये है कि हम project based learning कराते हैं, जिसमें क्या होता है कि बच्चे जो हैं start and they finish something. तो उनको वो एक ownership आ जाती है कि उन्होंने कोई create कर ली with an end goal in mind. So it's not learning for the sake of learning. आपको ये नहीं है कि टीचर ने कह दिया कि जी आप बैठो और आप जो मैं कह रही हूँ बोर्ड पे लिख रही हूँ वो आप just copy करते जाओ. It's project based. आपके पास अच्छा हम बताते हैं कि जी ये अब हम यहाँ से start करें, ये हमारा end goal है. How do we go about achieving this? So उसमें बच्चों की बहुत ज़्यादा ownership आ जाती है. बच्चे कहते हैं सर हम like score add करना चाहते हैं, तो हमारी game जो है उसमें हमें points मिलें. फिर हम enemy को shoot down करना चाहते हैं. हमें चाहिए कि हमारे पास 5 lives हों, right? So वो चीज़ें आप add करते हो. आप कहते हो अच्छा चलो हाँ हम ये भी कर सकते हैं. तो बाज़ दफ़ा तो हम ये भी करते हैं, बच्चों को option देते हैं क्या करें, अब ये करें या ये करें, अब next step क्या होगा. तो फिर बच्चे खुद इतने क्रिएटिव होते हैं कि वो फौरन हमें बताएंगे कि जी आपने ना मिस आप हम ये करेंगे नेक्स्ट. तो फिर आप कहते हो अच्छा चलो ठीक है, अब हम करना तो ये चाहते हैं पर हम कैसे करेंगे. अब कंप्यूटर को हमें बताना है कि हमने ये सब करना है, तो हम किस तरह कहेंगे. तो वो फिर ना उससे जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा उनको एंगेजमेंट होती है उनकी, और वो बहुत इन्वॉल्व होते हैं. सो इफ यू गिव देम द ओनरशिप, वो इवन यू आर नॉट टीचिंग एट देम, यू आर एंगेजिंग देम, यू आर सेइंग हम इक्वल हैं. तो वो ना वो जब चीज़ वो चली जाती है ना वो बैरियर, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं इस वजह से. अब मैं आपको एक और मेहराब ने जो स्क्रैच बताया, आई मीन ऑब्वियसली वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई कैन शो यू समथिंग एल्स दैट वी डू व्हिच इज माइनक्राफ्ट. अब माइनक्राफ्ट से ये है कि काफी दफा डाउनलोड करने की कोशिश की, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि मैं कोडिंग समझूं, because it's popular here as well, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती. every time I'd go in it I'd get lost. मैंने कहा मुझे तो अगर मुझे नहीं पल्ले पड़ रहा तो मैं कैसे समझाऊंगी अपने बेटे को. I think Minecraft का ये है कि the sky is the limit, right? हर चीज है उसके अंदर. आप बच्चे, और मुझसे honestly मैं पढ़ाती हूँ, मुझे 4 साल हो गए Minecraft पढ़ाते हुए, लेकिन I can never beat the kids in terms of the level of creativity, जो उनकी building है और सारा कुछ. तो मैं उस तरह से बहुत स्लो हूँ. तो मैं उनको कहती हूँ आप मुझे बताओ क्या करना है, मैं तो बस कोडिंग जानती हूँ, तो ये हमारा कोड है, तो हम कैसे करेंगे. तो जिस तरह अब आप कह रहे हो कि जी अब हमने ये एक रोमन एम्पायर पे कोड किया आज मेरे बच्चों ने, तो मेरी क्लास में कुछ थे, तो लाइक एक ये भी चीज़ है. और क्रॉस करिकुलर लर्निंग बहुत ज़्यादा है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि ये सिर्फ कोडिंग है, आप कंप्यूटर साइंस सिखा रहे हो. आप अब हमने ये हिस्ट्री का लेसन है, ठीक है. रोम था, रोमन एम्पायर थी, वो किस तरह डेवलप हुई, वो किस तरह उन्होंने एक्सपैंड किया, किस तरह उन्होंने इन्वेड किया. अब ये हम पाकिस्तानी हिस्ट्री के ऊपर भी ला सकते हैं ऑब्वियसली,
जो मोहनजोदारो की जो अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो किस तरह थी। तो वो किस और जब बच्चे जो हिस्ट्री दे डोंट नॉर्मली लाइक हिस्ट्री राइट, और लिटरेचर इवन मैंने अपने बच्चों के साथ लिटरेचर का कोई एक टॉपिक किया, शेक्सपियर का प्ले ले लो, अच्छा क्या हुआ उसमें, आप ये सब कर सकते हैं कि आपने वही चीज डिजाइन कर ली लेकिन माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में, और बच्चे इतना एंजॉय करते हैं उसको बिकॉज इट्स ऑल वर्चुअल राइट, फॉर देम देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल लाइफ, एवरीडे लाइफ एंड वर्चुअल लाइफ। तो वहाँ वही चीज इनैक्ट कर रहे हो आप, शेक्सपियर का प्ले हो गया, आपकी हिस्ट्री का लेसन हो गया, आपका लिटरेचर हो गया। सो देयर इज अ लॉट ऑफ क्रॉस करिकुलर लर्निंग। इनफैक्ट आप बैठ के तो आप माइनक्राफ्ट में केमिस्ट्री भी कर सकते हैं यहाँ पे। सो इफ आई शो यू, सॉरी आई एम जस्ट move this to the side. ये डिटेल्ड बहुत है, which I love about this, के क्योंकि हमारे बच्चे बहुत डिटेल फोकस होते हैं। Absolutely, और उनका रेजर शार्प फोकस भी होता है, सो वो इतनी ज्यादा आपके पास ऑप्शंस हैं अवेलेबल कि आप जो है ना वो केमिस्ट्री, जिस तरह ये देखें ये एंटायर पीरियोडिक, आई डोंट नो इफ यू एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री, लेकिन the entire periodic table of elements is in Minecraft. So आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के आप वाटर बना सकते हैं, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। मैं उस दिन मैं बच्चों के साथ हम बलून्स बना रहे थे, जो हीलियम डाली उसके अंदर, हमने हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके हमने लेटेक्स बनाया, फिर हमने उसको बलून क्राफ्ट किया, उसके अंदर हीलियम डाल के, उसके अंदर कलर डाल के, उसके अंदर स्ट्रिंग अटैच करके। तो ये सब चीजें ऑल्दो दे आर इन अ वर्चुअल वर्ल्ड, यू नो चिल्ड्रन रियली एंजॉय दैट। सो फॉर इंस्टेंस अब ये रोम का लेसन था, मैंने कहा चलो ऑन स्टार्ट पे हमने क्या कोई मैसेज हमने शो करना है, तो कंप्यूटर है, आपने कंप्यूटर को किस तरह, लॉजिक इसके अंदर है ना बेसिकली, अगर कुछ होगा तो उसमें क्या उसका रिजल्ट होगा, वो कंप्यूटर ने कैसे आपको बताना है, आप कंप्यूटर को सिखाओगे तो कंप्यूटर आपको बताएगा ना। सो वो सब चीजें जो हैं, अब जिस तरह यहाँ पे हमने कॉलिसियम बनाया है which is the equivalent of like a cricket stadium I suppose in the olden days, except कि रोम में वो जब कॉलिसियम में क्रिकेट देखने की बजाय वो जो हैं वो उनके दवाई करवाते थे। एग्जैक्टली। सो नाउ इफ यू सी I've just actually just with 3 lines of code I've made an entire coliseum. तो फिर क्या होता है, बच्चों को कहते हैं कि आपने अब ये कॉलिसियम बना लिया, अब आप इसके अंदर कोई चीज आप बना लो, like basically let me see if I can spawn a ravager. So अगर कुछ बच्चों को जैसे एनिमल्स का शौक है, यहाँ पे आप एनिमल्स स्पॉन कर सकते हो, ये देखिए हमने ये रैवेजर बना लिया यहाँ पे, ठीक है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ that can be done which is really really useful in everyday life as well, but it has really good links with learning. So cross curricular learning बहुत अच्छी हो जाती है माइनक्राफ्ट के साथ। in fact this is the education edition of Minecraft. आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं within like literally minutes. आप घर बना सकते हैं, और बच्चों को बहुत शौक होता है ये सब करने का बिकॉज दे लव बिल्डिंग। दिस इज लाइक लेगो, बच्चों को बहुत पसंद होती है, बट दिस इज एसेंशियली वर्चुअल लेगो जिसके अंदर आप मुझे भी ख्याल था। I mean, actually मैं एक फैमिली को ऐसी जानती हूँ, उनका बेटा स्पेक्ट्रम पे है, एंड वो इतनी इंट्रिकेट डिटेल्ड स्केचेस बनाता है कि लाइक आई थॉट ही इज एन आर्किटेक्ट ऑलरेडी, ही इज जस्ट 8 years old. बहुत ही ज्यादा उसमें एंगल्स और and I've been encouraging him like you have to consider coding because he will be so good at it. तो आपके ख्याल में हम अपने बच्चों का natural interest ऐसे थोड़ा gauge कर सकते हैं कि you know वो किधर interested हैं और उसको कैसे हम मजीद nurture करें और maybe marry it with technology. Definitely. अगर आपके बच्चों को कंप्यूटर पे आने का शौक है और उनको वैसे ही वो पसंद करते हैं, तो दिस इज यू नो, अब आजकल आप जहाँ बैठे हो दुनिया में, इतनी ज्यादा फ्रीलांसिंग कंप्यूटिंग में आ गई है कि यू नो बच्चे पाकिस्तान में 16 साल के बच्चे बैठ के, बिकॉज उनको कंप्यूटर्स अच्छे से आते हैं, वो $10,000 महीने के कमा रहे हैं just because they're sitting on a computer in their own bedroom and interacting with the world, just doing business with you know companies overseas, और you know अच्छे से वो कर रहे हैं। और उनके साथ जरूरी नहीं कि उनके पास डिग्री हो, यूनिवर्सिटी डिग्री हो, या उनको बहुत अच्छा उनने कोर्स किया हो कोई, just because अपने इंटरेस्ट की वजह से। So please continue, this is so fascinating. Thank you. अब अगर किसी के पास कोई क्वेश्चंस हैं तो I don't know if you want to moderate and maybe हमें are you ready for us to like take the questions? ये सवाल तो काफी आए हैं। Okay, yeah, absolutely. Okay, तो पहली चीज जो I guess मैं भी जानना चाहूंगी वो ये कि ये तो जो आप दिखा रही हैं, it's so intricate and so detailed,
लेकिन हमारे बच्चे शुरू कहाँ से कर सकते हैं, उनका बिगिनिंग स्टेप क्या होगा, कौन सी ऐप वो डाउनलोड करें, लाइक व्हाट्स आवर फर्स्ट स्टेप? I mean, first step is probably block-based coding. Because आपको वो बहुत सारी अच्छी चीजें अच्छे से सिखा देती है कि अगर आपने कोई चीज रिपीट करनी है तो आपको कोई पैटर्न आपको नजर आ रहा है तो आपने लॉजिक लगाना है, आपने लूप्स लगाने हैं. और फिर आहिस्ता आहिस्ता इट ग्रोज विद यू बिकॉज ब्लॉक बेस्ड से आप वेरी इजीली यू कैन जंप ऑन टू पाइथन. सो ये ब्लॉक्स ने बनाया है ये सब पाइथन में है. ठीक है. अब ये तो किसी ऑब्वियसली किसी नॉविस को जिसने पहले कभी कोडिंग देखी उनको समझ नहीं आएगी, लेकिन वेरी इजीली वंस द चिल्ड्रन स्टार्ट इन ब्लॉक बेस्ड कोडिंग दे कैन सी दैट लिंक वेरी इजी. बिकॉज ये सब सिंटैक्स होती है. ये तो इसी तरह से है ना कि आपने उर्दू सीख ली लेकिन आपने कैपिटल लेटर कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है. ये एक तरह से एक लैंग्वेज ही है ना, जिस तरह कि आपने कंप्यूटर में जिस तो और डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं पर उनकी जो टेक्निक है वो एक ही है. तो बस आपने उसके बाद थोड़ा सा सिंटैक्स सीखना है व्हिच इज लाइक द ग्रामर, वेयर डू यू डू हाउ डू यू स्टार्ट, हाउ डू यू फिनिश. एंड देन Samya, मगर what app or what website would you suggest? Minecraft से ही शुरुआत करें या कुछ और भी हैं जो कि थोड़ी relatively easy हों? I think Scratch is really good for younger children. So let me. And the best thing is you don't have to download, I believe, so anything for Scratch. So we do it on the Google itself, scratch.edu. आपका अगर आपने अकाउंट बनाया है so it's free obviously. ये MIT का एक वेंचर था. अब तो काफी साल हो गए उनको, but they're just amazing. बहुत सारी चीजें वो करते हैं. अब देखें ना कितने कितने लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे अपने अपने प्रोजेक्ट्स भी किए हैं. फीचर्ड प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं आपके. तो फिर जैसे हम अपने बच्चों को बताते हैं अगर आपने बहुत अच्छा सा काम किया तो स्क्रैच will probably one day put your projects on the the hall of fame or the wall of fame. So बच्चे बहुत खुश होते हैं. मेहराब जो है बहुत ज्यादा वो कराते हैं scratchathon which is like with his students. So Yeah, it's a Scratch competition between all the students. And interestingly, they were all divided over the week. So they were very excited. Okay, who's coming, who's not coming? We're all going to be in one competition with each other. And the students can be very competitive. So they really enjoy it once they challenge themselves, with others. So it's really nice when that happens. और कौन सी एज आपके ख्याल में Samya is suitable for kids to start coding? I think Scratch Junior तो मेरे ख्याल से 5 साल का बच्चा भी कर सकता है. It's quite easy. It's quite बनाई उन्होंने बच्चों के लिए ना, तो वो आप नेविगेट उसको बहुत इजीली कर सकते हैं. बच्चे तो वैसे ही आजकल टेक्नोलॉजी में इतने अच्छे होते हैं कि उन्होंने तो पेरेंट्स को पीछे छोड़ दिया होता है. So That is so true. मगर ये कि हमारे बच्चे उनको जब उन्होंने वो चीज स्किल नहीं सीखी हुई होती तो उनको सिखाना जब पड़ती है तो कभी कभी उनके लिए it takes them time. तो अगर if you think Scratch Junior 5 साल के बच्चे के लिए is a good place to start, तो where do you see kids on the spectrum start with your institute? वो लोग कौन से level से शुरू करते हैं? Suppose a 7-year-old or an 8-year-old. I think because the word spectrum says it all, right? Because it's such a wide spectrum कि कुछ बच्चे are naturally driven. तो वो 3 साल की उम्र में ना इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं because उनको इतना they're so focused क्योंकि उनका if it's their special interest for instance तो वो वो gifted बच्चे होते हैं. कुछ पे लेट भी कर सकते हैं पर obviously because वो बच्चे जो हैं अगर if they're on the spectrum कोई बहुत high functioning होंगे, some not as much. So वो तो आप गेज करते हो ना बच्चे के, तो उस हिसाब से पेस हम तो अपनी क्लासेस में ऐसे ही पेस करते हैं फिर बच्चों को कि बहुत थोड़ा थोड़ा करके सिखाते हैं क्योंकि what we don't want children to do is get overwhelmed or frustrated. Exactly. Because अगर आप बहुत ज्यादा एकदम से करा दो और यही होता है ना कि अगर 4 चीजें आप बम्बार्ड कर रहे हो उनको 4 इंस्ट्रक्शंस के साथ एक दफा तो वो थोड़े से ओवरवेलम हो जाते हैं. तो आई थिंक स्टेप बाय स्टेप अगर एक्सप्लेन करें तो फिर आई थिंक ज्यादा अच्छा रहता है. और एक्चुअली एक अच्छा सवाल है जो किसी ने पूछा है कि हाउ डू यू असेस दैट अ चाइल्ड इज सूटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स? आई मीन आप कैसे गेज करते हो कि हाँ नहीं ये इनका इंटरेस्ट है और इसको वी शुड कंसिडर दिस फॉर देम? If they generally like playing games, if they like being on a computer, for instance, उनको शौक है iPad के साथ और या किसी भी टैबलेट के साथ वो काफी टाइम स्पेंड करते हैं, उनको पसंद है ये सब चीजें करना, तो I think definitely I think really हर बच्चे का इंटरेस्ट होता है. अगर नहीं भी होता तो which is fine. अब देखा जाए तो हम हमारा ताल्लुक जो है ना वो कंप्यूटर से कभी जाने वाला नहीं है. So it's maybe something to explore anyway.
because the computers are there, you know, for the next however long, because they're not going away anywhere, right? In fact, हमारा ज़्यादा interaction किसी भी walk of life में हो, अभी हम आपस में बात कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही कर रहे हैं ना. अगर हमारे पास किसी के पास फोन हो ना हो, या कंप्यूटर या आईपैड या कोई भी टैबलेट ना हो, तो how would we communicate? In fact, the pandemic would have been far worse अगर हमारे पास ये सब टेक्नोलॉजीज ना होती, जो किसी ने इन्वेंट ही की होती. बिल्कुल. तो एक्चुअली आई मीन ये एक अच्छा सवाल था. और अगर इवन आपको लगे, मैं बाकियों से बात करना चाहूंगी कि जिनके बच्चे हैं, हमारे बच्चे यूजुअली कोई नई चीज हम उनको सिखाते हैं, उनका पहला रिस्पांस होता है कि नहीं हम नहीं करेंगे या हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको अपने ऊपर थोड़ा सा डाउट भी होता है. तो ऑब्वियसली पेरेंट को साथ लगना पड़ेगा, और समिया की टीम यहाँ पे मौजूद हैं टू आंसर योर क्वेश्चंस. they can, I hope Samia you can assist us as parents कि हम अपने बच्चों को इस प्लेटफॉर्म पे लाएं कैसे, और शुरू कहाँ से करें, और सबसे स्मॉल प्रोग्राम क्या होगा, easiest to do, जो कि उनका इंटरेस्ट का भी हो. Maybe they would like to put together a zoo with animals under 5. That would be a good place to start. बाकी बच्चों के इंटरेस्ट को फॉलो करते करते डिफरेंट कैरेक्टर्स ढूंढ के लाना, और उनकी वर्चुअल वर्ल्ड्स बनाना. एंड समया कैन गाइड विद दिस. एक सवाल ये है कि आई डोंट थिंक इट मैटर्स इन द सेंस के ऑटिस्टिक बच्चे भी ये कर सकते हैं, तो डाउन सिंड्रोम किड्स भी कर सकते हैं, ये एक सवाल पूछा है पेरेंट ने. Absolutely, absolutely. और ये ऑनलाइन आप कैसे फैसिलिटेट कर सकोगे समया, स्पेशली फॉर आवर किड्स जिनके लिए वर्चुअल लर्निंग इज ऑलरेडी वेरी टफ. It's challenging for a क्योंकि इतनी चीजें navigate करना ना एक साथ में कुछ बच्चों के लिए overwhelming हो जाता है. And also you know, classroom etiquette, अगर आप बैठे हुए हैं 4-5 बच्चे और हैं, तो you know, कुछ बच्चे होते हैं, they obviously they cannot control themselves, so they blurt out because they have a question and it needs to be answered right now, अभी इसी वक्त. तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, इसलिए हम बहुत छोटे ग्रुप्स में काम करते हैं, 2 या 3 बच्चे. एंड इट आल्सो हेल्प्स देम अ लिटिल बिट विद देयर सोशल स्किल्स. सो आई थिंक इस वजह से इट वर्क्स वेल, बिकॉज एक तो ये है कि उनको थोड़ा सा आदत भी पड़ रही है टेकिंग टर्न्स, कि अब उसकी बारी है पूछने की, अब मेरी बारी है पूछने की. तो वो आहिस्ता आहिस्ता लाइफ that they need to learn anyway, but if it's done in a nice small setting and it's a safe space with a really fun instructor who's like, you know, मैं तो मेहराब का मुकाबला नहीं कर सकती in terms of him making his lessons amazingly fun and engaging, because for some reason बच्चे तो मेहराब को बहुत पसंद करते हैं, but it's a safe space. I think that's probably what is the most important thing to understand, कि बच्चे जो हैं वो you know, like हमारी पूरी कोशिश होती है, और obviously meltdowns होते हैं, tantrums होते हैं, और पेरेंट्स इतने अच्छे होते हैं ना, माएँ इतनी अच्छी होती हैं मैनेज करने के हिसाब से. कभी कभी हम तो पेरेंट्स के इतने शुक्रगुजार हो रहे होते हैं कि you know, they're just doing so well in terms of just managing the whole interaction. And sometimes I think मुझे ये भी लगता है कि it's a really good bonding exercise as well. अगर आप अपने बच्चे के साथ बैठे हैं और कह रहे हैं चलो ये करते हैं, तो आई थिंक बच्चे भी खुश होते हैं, और आपकी भी एक थोड़ी सी बॉन्ड डेवलप हो जाती है अपने बच्चे के साथ. Oh, absolutely. I think ये बहुत amazing insight आपने दी है कि ये इससे हमारे बच्चे learn करते हैं how to work with in teams at a younger age, virtually connect करना, especially उन बच्चों के लिए जिनके लिए virtual schooling difficult है, और या online learning difficult है, उनके लिए ये चीज़ motivating हो जाती है कि oh हमने कुछ बनाया, उसमें हमें like it's a self rewarding activity. तो और जो आपने बॉन्ड के बारे में बात की वो बिल्कुल सही की. एक सवाल इधर हमारे पास ये भी है कि क्या हम ऑनलाइन लर्निंग आपके इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं? मेरे ख्याल से आपने इसका जवाब दिया, लेकिन प्लीज थोड़ी सी डिटेल्स और शेयर करें. Absolutely. I think हमारी contact details, I mean, मेरी तो I'm UK based, Mehrab is local, but obviously आप कभी भी मेरा I can add my email address here as well. I think अलीना के पास है, तो मेहराब का तो ये है, और फ़ोन नंबर भी है मेहराब का, तो अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं, if you want to reach out, by all means do that. हम ज़रूरी नहीं है कि आप हमारी क्लासेस में आएँ, हम आपको बहुत अच्छे से गाइड भी कर सकते हैं. अगर if you're a parent and you don't want to do this with us, you know, we're happy to help. हमारा मकसद, I think primary हमारा reason for forming the company wasn't really to obviously generate a profit or whatever. I think that was a consequence rather than the initial वो कि हमने पैसे कमाने, हमारा ये नहीं था कभी भी. हमारा बस यही वो था कि हम we want to help because हमारे अपने बच्चे जो हैं वो इतने टेक्नोलॉजी में, मेरे खुद के बच्चे बहुत थे, तो
it started as a desire to want to help other people as well. So awareness is better because जो आप और मेराब यहाँ पे लेके आ रहे हो पाकिस्तान में, ये एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो हमारी पाकिस्तानी फैमिलीज अवेल नहीं कर पाती यूजुअली. आई मीन आई एम श्योर कि कोडिंग और आ रही होगी पाकिस्तान में, लेकिन द वे यू एंड मेहराब आर teaching it and spreading that word, that's really amazing. और हमारे बच्चों को ज़रूरत है कि कोई compassionately, inclusively चले. Usually people put their hands up and go like, नहीं नहीं आपके बच्चे से नहीं होगा. And that's where parents get discouraged. absolutely. तो एक और सवाल जो इधर पूछा गया है वो ये, and actually this is a very good question, कि अगर बच्चा नॉन वर्बल है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और टीनेजर है, मगर नॉट नेसेसरली ओनली अ टीनेजर, आई थिंक ये सबके लिए रेलेवेंट होगा, नॉन वर्बल विद बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आपके ख्याल में क्या वो भी इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकेंगे? Absolutely, क्यों नहीं? I think एक दफा मेरे पास एक बच्चा आया था और here in London, but then his like drop off था because face to face class थी, and he came with his brother. So उसकी अम्मी मुझे कहती हैं कि आप ना उसकी तरफ देखना भी ना, उससे बात भी ना करना, उसके भाई से बात करना, क्योंकि वो बिल्कुल नॉन वर्बल है, वो बात नहीं करता. तो I honestly by the third lesson he was talking to me. मैंने उससे इनिशिएट नहीं किया था ज़्यादा कि मैंने कहा वो या ज़्यादा ओवरवेल्म ना हो जाए मैं, और वो मतलब बातें भी कर रहा था. जनरली शायद घर में करता हो, कुछ बच्चे तो बिल्कुल नॉन वर्बल होते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं. I think it's more their comfort level. And then अगर छोटी सेटिंग में हो, 1-to-1 की एक्सेस हो, तो I think वो बेस्ट रहता है, because फिर ये होता है कि pick up कर सकते हो क्लास को. हाँ, why not? I think even if there are non-verbal children, टेक्नोलॉजी में सब बच्चे बहुत तेज होते हैं. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एब्सोल्युटली. और नॉन वर्बल बच्चों के लिए तो इनफैक्ट टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फॉर देम इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स. वो बोल नहीं सकते, तो उनको कोई तरीका चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने का. एक और सवाल जो है वो है, आर पेरेंट्स अलाउड टू स्टे विद चिल्ड्रन इन द कैंपस? अभी तो कैंपसेस बंद हैं, लेकिन जब खुलेंगे तो आपके ख्याल में ये चीज फैसिलिटेट कर सकते हैं आप? हाँ, definitely अगर पहले से pre-arranged हो, so why not? I don't think we'd have a problem, because हमारे supervise तो वैसे ही कर रहे होते हैं, जो tutors होते हैं, तो that's totally fine. It's fine. Okay, fantastic. इधर charges के बारे में सवाल हैं 2-3. Would you like to share? Is there an information we can access? I don't know, Mehrab, do you want to? We can send a leaflet. Well, yeah, sure, but like you can go ahead and contact, like we have provided a contact, so you can always ask for all the charges, because there are various different programs that are running, right? So there's not one specific program that we could talk about when it comes to charges and stuff. So it's like it depends on what you enroll for. So on the basis of that, we decide we have a decision about with regard to our charges and stuff. So that's how it is. But I don't want to go into it further. But you'd be free to contact us, so we'll let you know. Absolutely. I mean, सबके लिए different packages होंगे, I'm sure, और ये different classes run कर रहे हैं. तो आप अपने specific सवालों के लिए मेरा आपको contact करें. We will be sharing the contact information in a post as well, ताकि आपको easily accessible हो. इधर शहीरा का एक सवाल है, वो मुझसे काफी दफा कह चुकी हैं, तो मैं उनको एक opportunity दूंगी. Please, Shahira, go ahead, ask your question. Thank you so much, Batul. Firstly, Mehrab and Samina, thank you so much for being so generous and coming up and talking about such amazing and much needed topic. I have a question. बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो visual learners नहीं होते, mostly होते हैं लेकिन कुछ नहीं होते. Kids with specifically with dyslexia or any learning disability, dyspraxia, dyslexia, उनके लिए virtually सीखना बहुत मुश्किल है. Or I think when it comes to coding, तब भी थोड़े challenges आ सकते हैं. So I have two questions. How do you guys cater such kind of cases? And number two, since Punjab is in Lahore, which is very good, and if someone wants to approach you or वो चाहते हैं कि आप physically, lessons ले, because that kid is not virtual learner. So is this available for distance learning? One child, one mihrab and one child, so they can come up to you and you can facilitate it. Thank you. Yeah, absolutely. हमारा definitely plan है to obviously reach out, because बहुत सारे बच्चे वाकई में they struggle remotely. हम अभी तो मॉडल टाउन की ब्रांच है हमारी, जो इस वक्त तो बंद है,
obviously because we're following government SOPs. But जब pandemic, obviously things are going to open up. ये तो बात नहीं है कि सारा वक्त ही हर चीज़ बंद रहेगी. But inshallah when they do, तो हमारा प्लान यही है कि हम लाहौर में तो पहले कुछ ब्रांचेस खोलें, पर इवेंचुअली यही होगा कि हम आहिस्ता आहिस्ता और डेवलप करेंगे. But वो you can reach out and find out. Secondly, with regards to online learning for a child who's dyslexic, for instance, and doesn't really want to type or struggles with reading. अब आप ये देखें ना कि काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो ब्लॉक बेस्ड हैं. तो मैं बाज़ बच्चों को ये कहती हूँ कि हम बहुत सारे कलर्स यूज़ करते हैं. जिस तरह अच्छा हमने गेम प्ले में जाना है, तो अगर आप देखें ब्राउन वाला, तो हम कलर्स बहुत यूज़ करते हैं, हम नंबरिंग यूज़ करते हैं. अच्छा ब्राउन गेम प्ले में जाओ, इट्स 7th one down, so 1 2 3 4 5 6 7. बाज़ हम ये भी कहते हैं वो जो सबसे पतला सबसे लंबा वाला है, that one. So that's the show command. So आहिस्ता आहिस्ता विजुअली उनको आदत पड़ जाती है कि अच्छा ब्राउन में जो सबसे वो वाला है वो शो कमांड है. तो इस तरह obviously there are things that we can do to help them as well. तो ज़रूरी नहीं है कि उनको बहुत अच्छी रीडिंग राइटिंग आती हो, because they can get by on and then over time, because वो इतने अच्छी उनकी यादाश्त होती है ना, they have good photographic memory because of that. उनको खुद ही याद हो जाता है कि अच्छा ये वाला था. And a lot of these things you will notice इनके वैसे भी they're very visual. यहाँ पे ब्लॉक बना हुआ है, यहाँ पे एक शू बना हुआ है, तो वो हम उसका रेफरेंस भी दे देते हैं बहुत दफा, तो वो इतना कोई इशू नहीं है. एक और बहुत excellent सवाल है. Shahira, did that answer your question or do you have more to add? No, thank you so much. I'll just give a thumbs up. I got it. Thank you so much, Samia. एक बहुत excellent सवाल फौजिया ने उठाया, and actually this is an amazing question और मैं बहुत interested हूँ इस आंसर में भी. Do you have a program जिधर आप पेरेंट्स को सिखा सको so that they can work on their kids? Because कभी-कभी ऐसा भी होता है कि obviously as parents we are always working on different skills with our kids और हमारे बच्चे हमसे सीखने में comfortable भी होते हैं. अब while this is the ultimate goal कि बच्चा virtual learning आपसे करे या आपके institute पे आके मेरा आपसे करे, if we can bridge that gap somehow, or something like train the trainer as she suggested, would you be interested in something like that? Absolutely. I think हमारा ultimate goal यही होता है कि to make the children as independent as possible. So independent learners जो होते हैं ना, वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी खुद की और खास तौर पे I think children who are autistic, they are independent learners because जिस चीज़ में उनका passion है ना, वो हर चीज़ सीख लेंगे उसके बारे में, चाहे वो YouTube से सीखें, चाहे वो किसी ऑनलाइन किसी और प्लेटफॉर्म से सीखें, because वो कर लेते हैं. I think I see a lot of people smiling, so I think you can relate to that, right? So लेकिन ये है कि हम डेफिनेटली कर सकते हैं. पेरेंट्स की क्लासेस हमारे से पूछते हैं बहुत लोग, but then फिर पेरेंट्स आर जस्ट सो बिजी as well in their own, because हम कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर लोग कहते हैं वो हम बड़े बिजी हैं, whereas बच्चों के पास थोड़ा सा, although बच्चे बहुत बिजी हैं आजकल के, लेकिन वो फिर भी पेरेंट्स उनको ले आते हैं. But we definitely be interested. That's obviously something that we would love to do. Parents would be interested जो कि यानी कि बच्चों के लिए अपनी self learning खुद कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोग home schooling भी कर रहे होते हैं, तो this would be a good addition in that. Fawzia, आपका सवाल, how do you transition from block programming to language programming? Is this over? Yeah, go ahead please. Yeah. That's a really good question. जब एक दफा बच्चों को ब्लॉक प्रोग्रामिंग आ जाती है ना, जब वो सारी चीजें सीख लेते हैं कि अच्छा लॉजिक क्या है, तो फिर जो ट्रांजिशन है ना वो बहुत इजी होती है. फिर हम ये भी कह सकते हैं अच्छा देखो ये हमने ब्लॉक में ये किया, तो अगर हम इसको जावास्क्रिप्ट में करना चाहें तो ये ऐसे होगा. तो छोटा छोटा करके ना हम आहिस्ता आहिस्ता उनको फिर we bring them over. The transition is actually very gentle, but इसका ये मतलब नहीं कि हम उनको दम से वो खत्म करके तो उसमें ले जाएंगे. So it's quite a nice, gentle kind of transition over to text-based. But even text-based, I know somebody also mentioned Shahira about the fact कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नहीं टाइप कर सकते. आप डिक्टेट कर सकते हैं कंप्यूटर को. आजकल तो डिक्टेशन के इतने ज़्यादा टूल्स आ गए हैं कि आप एक बटन दबाएं and you just say things and the computer just types it in for you. So that's not a problem either. So. किसी के अगर कोई और सवाल हो, thank you so much for answering that, Samia, and that was really helpful. तो प्लीज इधर सवाल आप लोग और शेयर कर सकते हैं. We still have a couple of minutes. अलीना, आपका कोई स्पेसिफिक सवाल हो तो?
It was amazing. Thank you so much, Samia and Mehrab. I'm sure ये सेशन काफी ज्यादा फ्रूटफुल और हेल्पफुल रहा होगा पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, बिकॉज वी आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड अ लॉट. और यूएस से अगर हम लोग अपना कंपैरिजन करें तो हम 80 इयर्स पीछे हैं. तो इस सेशन को करवाने का रीजन ही ये था कि हमारे यहाँ पे अक्सर पेरेंट्स जब मेरे से आके क्वेश्चन करते हैं वो कहते हैं हम अपने बच्चे को क्या सिखा सकते हैं, ठीक है. और जो दुनिया को चलाने के लिए एक सबसे बड़ी चीज है टेक्नोलॉजी, और जिसमें हमारे ऑटिस्टिक बच्चे या ऑटिज्म के साथ या किसी और डिफरेंट एबिलिटी के साथ बेस्ट है, वो उस चीज को फोरसी नहीं कर सकते. कहीं ना कहीं हमारा कॉन्सेप्ट यही है पुराना कि अगर कोडिंग होगी तो उसमें यू हैव टू राइट ऑल द कोड विद द फुल स्टॉप्स एंड एवरी हर चीज के वो जो प्रोस एंड कॉन्स देखना जरा मुश्किल हो जाता है, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना उनको लगता है कि शायद पेरेंट्स के लिए भी और बच्चे के लिए मुश्किल हो जाएगा. जबकि अब 90% ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए जो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है, जैसे आपने स्क्रैच का दिखाया. मुझे ये चीज इतनी अच्छी लग रही है इसमें, इट्स माय फर्स्ट टाइम कि मैं इसको देख रही हूँ कि इसमें जो कलर कोडिंग यूज हुई है. कल ही हम एक सेशन शहीरा के साथ कर रहे थे और अप्रैक्सिया को और डिस्लेक्सिया को लेके उसने यही चीज मेंशन की थी कि अगर आपका बच्चा जो सा होता है उसके लिए लर्निंग डिफिकल्टी होती है, तो अगर आप उसको ब्लॉक्स में कलर्स में डिफाइन कर दोगे हर स्टेटमेंट को या इंस्ट्रक्शन को, तो उसके लिए लर्निंग बहुत आसान हो जाती है. तो अब कंप्यूटर्स उतना डिफिकल्ट नहीं है जैसे आज से कोई 10 या 20 इयर्स पहले होता था. चीजें बहुत आसान है और फ्यूचर में ज्यादा आसान हो जाएंगी. फिर इसके अलावा भी एक फेसबुक पे भी काफी पेरेंट्स है जो क्वेश्चन कर रहे थे कि मैंने क्यों इस टॉपिक को सिलेक्ट किया ऑटिज्म के ग्रुप में शेयर करने का. तो उसकी रीजन ही ये थी कि हम लोग बहुत ज्यादा इस चीज को इग्नोर करें. अगर हम बहुत इनिशियल लेवल से स्टार्ट कर देते हैं हम अपने बच्चों के साथ, बजाय इसके कि हम इस चीज पे हर वक्त वो कहते हैं ना पिन पॉइंट करते रहे हमारा बच्चा जो से एसेज याद नहीं कर पा रहा, मैथ्स में फेल हो रहा है, उसको ये चीज नहीं आती, उसको बस सारा ध्यान ड्राइंग की तरफ है. तो व्हाई कांट वी टीच देम डिजिटल ड्राइंग, ठीक है. अगर आपका बच्चा डिजिटल ड्राइंग करता है, ग्राफिक सब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, तो आप उसको सेल करके इतनी ज्यादा ऑनलाइन ऐसी शॉप्स है, ऐसे फ्रीलांसिंग के वो बने हुए हैं प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आपको सेल कर सकते हो. और कई पेरेंट्स ये भी कंप्लेन करते थे कि जी हमारे पास जो से है बच्चे जो से है वो एंशियस हो जाते हैं स्कूल्स में जाके, सोशल गैदरिंग में जाके, और इस जो टीनेजर्स है वो कैसे काम करते हैं. तो घर से बैठ के भी यू कैन अर्न अ लॉट. I am a freelancer myself, ठीक है. I work from my home because I have a special need child. तो मैं बाहर जाके काम नहीं कर सकती. So I am a very big example for you guys कि मैं घर में रहते हुए I can generate this much funds कि मैं उनको पढ़ा सकूं या काम कर सकूं. तो autistic बच्चे they are logical thinkers, they are visual thinkers. तो अगर आप उनकी इस चीजों पे काम करोगे, अगर लॉजिकल थिंकर होगा कोडर बहुत अच्छा होगा, कोडिंग बहुत अच्छी कर सकता है. विजुअल थिंकर होगा तो ग्राफिक्स बहुत अच्छे डिजाइन कर सकते हैं. तो आई एम सो हैप्पी कि आपने बीइंग प्रोफेशनल आके उस चीज को जो है कन्वे भी किया. आई थिंक कि आज के जो सेशन है इससे काफी हद तक हमारे जो खदशात थे वो खत्म हो गए होंगे, और आई एम श्योर के पेरेंट्स और इस चीज को फर्दर लेके चलेंगे. और ना सिर्फ अपने न्यूरोडाइवर्स चिल्ड्रन के लिए, न्यूरोटिपिकल बच्चों के लिए भी सीखने की जरूरत है. आई एम श्योर जैसे पेरेंट्स कह रहे हैं कि ट्रेन द ट्रेनर, तो उसमें ये चीज बहुत आ जाती है कि अगर आपका एक न्यूरोटिपिकल बच्चा है, दोनों बहन भाइयों को साथ भेजे तो वो बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी होगी, वो लर्न भी करेंगे और एक्सेल भी करेंगे. I just wanted to add this up, और thank you so much once again. आपने सारा कुछ हमारे साथ शेयर किया. You took the time out. Thank you so much. No problem at all. Happy to help. कोई भी आप किसी का सवाल हो तो very happy. Alina, sorry for cutting you guys. Alina and Batul, please have a look on Facebook questions as well. After that, you can write it up. Hello. जी हमें आवाज आ रही है, लेकिन आप अगर क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, नहीं तो माइक यूज कर लीजिए. अच्छा बतूल, मैं कुछ क्वेश्चन. जी बिल्कुल आ रही है. आपके कोई क्वेश्चन हैं तो प्लीज पूछिए. जी मेरा ये क्वेश्चन है. मैं कराची से बात कर रहा हूँ और मेरा बेटा है 3 साल का ना. तो अभी हमने उसको डॉक्टर से दिखाया है, तो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसमें कुछ फीचर्स हैं लेकिन अभी कंफर्म नहीं हो रहा कि है या नहीं. तो मुझे बताएं कि कराची में हम कहाँ से कराएं. मैंने 10 सर्कल से कराया है जो डॉक्टर सदफ शाहिद का है, आपको पता होगा, बुखारी कमर्शियल में फेज 6 में मैं वहीं पे रहता हूँ.
तो कोई अच्छा इंस्टीट्यूट बताएं कि हम कैसे डायग्नोस कराएं और क्या करें। हम थेरेपी करा रहे हैं उसकी, स्पीच और ऑक्यूपेशनल, लेकिन काफी बेटर भी है वो। तो ऐसा पॉसिबल है कि पहले बच्चे में फीचर्स हों और फिर टाइम बाय टाइम वो बिल्कुल एडजस्ट हो जाए और बच्चा ऑटिस्टिक ना हो? ये आप हमारा आज का टॉपिक जो है वो कुछ और है सर। आपने ये टॉपिक जो आप पूछ रहे हैं वो कोई डिफरेंट टॉपिक है। हम डेफिनेटली आपके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन ये जो वेबिनार अभी चल रहा है वो एक्चुअली कोडिंग के लिए चल रहा है। तो क्या हम आपको प्राइवेटली मैसेज करके हेल्प कर लें? जी जी बिल्कुल कर दें। और मैंने क्योंकि अभी ज्वाइन किया है तो मुझे इसका कोडिंग का भी इतना पता नहीं है, और मेरी तरह और भी हो सकता है लोगों जिनको पता ना हो, तो थोड़ा सा स्टार्ट से बता दें। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मैंने अभी ज्वाइन किया, कि बेसिकली ये कोडिंग क्या होती है, थोड़ा सा मुझे भी अवेयरनेस हो जाए ना, मेरे साथ के और भी लोग होंगे तो एक दफा थोड़ा सा और समझा दें प्लीज। थैंक यू। आप प्लीज म्यूट कर लें तो मैं बता देती हूँ आपको। इसकी ओ, रिकॉर्डिंग ओ, मौजूद है और हम शेयर कर रहे हैं, तो यू विल बी एबल टू सी दैट। शुरू से आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। मेरे पास समय आपके लिए एक दो सवाल और हैं, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि जो फेसबुक के ऊपर सवाल आए वो मिस हो जाए हमसे। ये सवाल था कि फ्रॉम वेयर वी कैन स्टार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका जवाब समय देंगे कि आप लोग स्क्रैच से, और फेस टू फेस फैसिलिटी अवेलेबल इन पाकिस्तान। तो आई थिंक वो मेहराब जो है वो हेल्प करेंगे उसमें, जब इंस्टीट्यूट उनका खुल जाएगा। अभी सब कुछ बंद है, तो आप मेहराब को कांटेक्ट कर सकते हैं। एवरीवन, ही इज वेरी हेल्पफुल and he's very enthusiastic about helping everybody, so I think it's going to be great. You can always, sorry to cut you off, but you can always contact because the number to वगैरह ने provide किया हुआ है. So abhi like everything is a little difficult to understand. So back and forth with them opening schools and then closing them again and then opening, and we're not really sure. But once everything would, because it depends on the government, of course, if they're okay with face-to-face sessions. Like in general, if schools and institutions open up, then we'll go ahead. We'll go for these physical sessions. But for now, we do offer some services, so definitely do contact us. So we'll help you out. Sounds great. Well, thank you so much, Mirab and Samia, for your time today and for bringing awareness to this topic. और ये एक inclusive environment हमारे बच्चों को देने के लिए, especially with Mirab's help, जो कि locally मौजूद होंगे लोगों के लिए, this is actually really really huge. हम बहुत grateful feel कर रहे हैं कि आप लोग ये इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं पाकिस्तानियों के लिए. You don't understand. ये inclusivity is hard to find even overseas. So to have that in Pakistan, it's just amazing. So thank you so much. Not at all. Happy to help. Pleasure. Okay, everyone. So I think Alina, do you want to have any last words to add, or shall we wrap it up? That's totally fine. Thank you so much once again. I hope in future maybe अगर we have any questions so we can contact you. Parents इंशाल्लाह आपको contact करेंगे, और मैं further आपकी जो details है, number मेहराब का है, share कर दूंगी. और अगर हमारे overseas जो पाकिस्तानी families हैं वो भी अगर आपसे कुछ जानना चाहेंगे तो समय I'll share your contact number also. Thank you so much once again. Allah Hafiz. Take care. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.